Good evening, students. I am C. Asha as a faculty of accounts from Board of Studies. Welcome to the live learning classes LLC for Intermediate Paper 1 Advanced Accounting. These classes will be helpful for students appearing for May 2024 examination as ICAI is rolling out the new scheme which will be applicable from May 2024 and onwards. I would be extremely happy to introduce our eminent faculty, C. Sanket Shah, who would be taking you through the accounting standard sessions. These classes will be help you gain the understanding of provisions of accounting standards and their applicability. All your doubts will be clear during the session. With this note, I would like to request C. Sanket to please start the session. C. Sanket, please start the session. Thank you, ma'am. And thank you, Board of Studies, for giving me opportunity. First, I will introduce myself. Hello, students. Good evening to all of you. I am CA Sanket Shah. Today marks of the beginning of an exciting journey as we commence a new course online batch with ICAI Institute. In this batch, we will come together to acquire a crucial knowledge required to become a successful chartered accountant. We are stepping into a challenging yet rewarding phase, and I am fully committed to being supportive guide for all of you. My aim is to provide you with all the necessary assistance and guidance so you can achieve your CA aspirations. So beta, today we are going to start with our first session of advanced accounting. And why advanced accounting? First, we have to understand why advanced accounting. What is new in this advanced accounting course? Beta, before starting today's session, first I will tell you these lectures will be in English. That is, I will first explain all concepts in English and then beta we will do revision in Hindi also. तो बाकी के जो मेरे दोस्त लोग हैं ERO, NRO और WRO, CRO, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. Lectures will be in Hindi plus English. So don't worry. And South Indian students, yes, lectures will be in English for your concept clarity. Revisions will be little bit in the Hindi. So before starting today's session, I will first give you introduction of our syllabus, advanced accounting. Sir, accounting is a language of business. तो आप लोगों को ये पता ही होगा, accounting ये हमारा language of business है. So here, now in this slide, first I will introduce what is accounting standards or what is the advanced accounting course. Then syllabus part, small topics, big topics, overview, overall, and then conclusion. And then we will start with first chapter. So before starting today's session, beta say good evening in the comment section. Chalo jaldi se join ho jao beta jaldi jaldi. Yes, Divya Kumari ji, Vishal Pandey ji, Divya Kumari, yes, good evening. Gunjan, Sankaran ji, yes, good evening. Sohail, Parth, Rana, good evening to all of you. Chalo jaldi se comment section में where to join these classes. तो बेटा first thing you have to अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज के एप्लीकेशन पे you have to come to our BOS app. BOS app में से आप लोग हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो. You can interact with us. So BOS app पे बेटा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आप लोग हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं. So every one of you please download our BOS app और वहां से you can interact. Okay. So before starting today's session, what is introduction part about this advanced accounting? Why this subject? So anything before starting, we should know why we are learning this subject. Accounting is one of the core competencies of chartered accountant. So every chartered accountant name itself, it is accounting. Advanced accounting focuses on understanding applicability and mandate of accounting standards. Now at foundation level, you already understood how to pass journal entries, ledger account, trial balance, P&L, and balance sheet. Now at intermediate level, in advanced accounting, your focus should be on accounting standards. How we are going to use that standards and some corporate accounting concepts. But Ind AS is also there. Now every company, listed company has to follow Ind AS. But Ind AS syllabus we have at CA final level. Today I will give you introduction of Ind AS. But we have in detail what is accounting standard. And that journey we are going to start from today.
अभी जो सिलेबस है ना, आई वोंट से इट इज नाउ इट इज अ प्रैक्टिकल सिलेबस जिसमें एंट्रीज लिखना, लेजर करना. नाउ सिलेबस इज स्लाइटली चेंज. नाउ इट इज मोर टूवर्ड्स accounting standards. Now what is accounting standard? Learning how to make it interactive. Yes, ये मैंने बहुत मेहनत लिया है. I have done lot of hard work on these slides to make it very simple. Okay, so don't worry, you are in safe hands. Students are expected to gain the ability to apply accounting standards and legislations to different transactions and events and understand the presentation of financial statements. So what is the syllabus? First thing, syllabus is accounting standards, and accounting standards. Okay. So disclosure based accounting standard. Yes, I will give you this. There are total 7 accounting standards in disclosure based. This is your chapter number 4. Okay. Your chapter starts from chapter number 4. Each and every accounting standard you can see here. Accounting standard 1. Yes, I will give you that journey. Don't worry. So disclosure standard के बाद आएगा asset based standard. So what is asset based? So this accounting standard is going to affect your assets. So these are S2, 10, 13, 16, 19, 26 and 28. So again, 7 accounting standards asset based. So 7 accounting standards disclosure based and 7 accounting standards are asset based. Okay. After that, liability. So you are aware about the equation. Asset minus liability is equal to capital and income minus expense is equal to profit. So this is liability based. So asset based to first one is disclosure based. Chalo yaad karo, disclosure based, then asset based and then liability based. How many liability based accounting standards? Only 2 based on liability. Okay, only 2. Then you have impact on financial statement based. Now what is this? S4 events occurring after balance sheet date and S5, S11 and 22. These are not specifically income, expenses. These are impact which is given on the financial statement. So these are 4 accounting standards. And after that, revenue based accounting standards 7 and 9 are revenue based accounting standards. So revenue based accounting standards, asset based हुआ, disclosure based हुआ, then you have asset based, then liability based, then financial statement पे impact आने वाले, and last revenue based, and last one will be other AS. That is only 2. Okay, so other AS residual category. Then you have consolidated financial statement, that is holding company and subsidiary company, in which we are going to see consolidated financial statements. So S21, 23 and 27. पहले ही मैंने बोल दिया था कि your journey is only and only accounting standards and accounting standards. So small topics, introduction to S, framework for preparation of financial statement, then applicability of accounting standards and buyback. Only 4 small chapters are there, and big chapters are big topics are 11 number, that is cash flow statement plus balance sheet pro forma, amalgamation of company, reconstruction of company, and 15 number is accounting for branches including foreign branch. So there are 4 big chapters and 4 small chapters. Okay, and this is how you are going to do your journey. So this is the end part, accounting for branches. तो accounting for branches है आपका last रहने वाला है, ये याद रखना, और यहां पे हमारा जर्नी खत्म होगा. So today is the first day. Then overview. So overview is what? Under this new syllabus, you are expected to understand various accounting standards and corporate. See the level, it is corporate accounting concepts. So here we have to understand at कंपनी लेवल, कॉर्पोरेट लेवल. सो अभी थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे देखेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वी हैव डन एट द फाउंडेशन लेवल. नाउ इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और जो हमें सीखना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सबको कंपेरेबिलिटी के लिए भी इजी जाएगा. वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टर के एंगल से, शेयर होल्डर्स के एंगल से, गवर्नमेंट के एंगल से. ओवरव्यू जो है ये इसीलिए दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट by institute? Students are expected to gain the ability to apply this accounting standard and legislation to different transaction and events. Sir, transaction and events I already
taught you at foundation level. Foundation level में मैंने बताया था transaction means what? Any happening, and result is called as event. So transaction, any act is called as transaction and result is called as events. So while passing any entry, and then after that how to apply accounting standard for that entry, we have to understand it while preparation of financial statements. सर कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं. सो संकेत सर के एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से क्या है कंक्लूजन पार्ट पे? You have to maintain 100 pages का notebook. This is Sanket sir secret. Okay. So 100 pages का book, maintain a separate 100 pages का book only for your concepts and formula for revision purpose. Sir, there are some standards, accounting standard 20, in which we need the formula also. Okay. So concept and formula. Maintain index of notebook. Okay, so index is also very important. So it will help you at the time of revision, and practice questions after lecture using टिक-टिकी-जी technique. So टिक-टिकी-जी technique हम लोगों को use करना है timer के साथ. We have to solve these questions in at home. तो बेटा ये इसका बहुत बड़ा फायदा उठाना. Be consistent and result will come to your way. Okay, so all the best for your accounts journey. So advanced accounts journey के लिए आप सबको मेरे साइड से बहुत सारी शुभकामनाएं. जल्दी से गुड इवनिंग बोल दीजिए. ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. टोटल हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर? यस बेटा, आई विल टेल यू हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर. एक झलक आपको दिखलाता हूं. ओके, स्टैंडर्ड्स के बारे में. और तब तक आपके जो भी डाउट्स होंगे you can ask me, and please those students, so for whom it will be helpful, ICAI is giving this activity free of cost. Not it's exactly free of cost, you have registered yourself, so it is one of the benefit which is given by the institute. Sir, best faculties not only for any advanced accounting subject but for all subjects ICAI ने चुन के फैकल्टीज लाए हैं. तो आप लोगों को इसका फायदा उठाना है. सेकंड थिंग कि आप लोग यदि इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स से पास होंगे. एंड हियर एवरी फैकल्टी, यस, दे फोकस ओनली ऑन स्टडी मटेरियल. और स्टडी मटेरियल बनाने के लिए अवर बोर्ड ऑफ स्टडीज के टीम ने दे हैव टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स. सो एवरी वन ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कलरफुल नोट्स. और ये सब करने से अच्छा रीड फ्रॉम स्टडी मटेरियल. मेक स्टडी मटेरियल यूर भगवत गीता, बाइबल, कुरान, सब इसी तरीके से करो. देन you will get the success. What happens, students normally they think they don't want to come out of their comfort zone. उनको सिर्फ easy चाहिए. Yes बेटा, definitely we will make easy, but ultimately you have to do lot of hard work. और वो hard work किया तो result will be yours. Okay, थोड़ा सा late हुए हैं, but already sir we attended some classes. बहुत सारे लोगों के ये आते हैं कि we already attended these classes but we have not understood. So every one of you, this is very comfortable timing in the evening 6 to 8:30 and morning, early morning our classes are there. बाकी time पे you do your self study, and 6 to 8:30 में 2.5 hours में ICAI classes में बाकी सब चीजें होती नहीं है. We focus only on concepts. तो आप लोगों को अच्छा फायदा उठाना है. और 7 to 8 months from here up to May month you have to do proper hard work. और सक्सेस नहीं मिला तो मुझे बता देना. सो यहां पे अभी हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे जर्नी की. बिफोर स्टार्टिंग टुडे जर्नी, बस आई वांट यू, एवरी वन ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू रिकॉल ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नेम्स. ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम मैं पहले आपको बता देता हूं. लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. 1 minute बेटा. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम, एंड इन नेक्स्ट सेशन आई चैलेंज यू ऑल कि आप लोग पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ट्राई टू गेट द नेम्स एटलीस्ट. ओके, नेम्स को याद करने की कोशिश कीजिए. चलो, सो लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट वन, आई विल बी वेरी स्लो फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यस, फर्स्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. दिस इज योर फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. यस, देन S2 is valuation of inventory. Number 3 is cash flow statement. Number 4, contingencies and events occurring after balance sheet date. Number 5, net profit or loss for the period prior paid items and changes in accounting policies. Number 7, construction contract. Number 9, revenue recognition. Number 10, property, plant and equipment. 11, effects of changes in foreign exchange rate and accounting for government grant.
investment accounting, accounting for investment, accounting for amalgamation, and employee benefits is 15 number. These are only 15 accounting standards. Out of that, you can see there is no number for 6 and 8 because it is removed. Instead of 6, now we have 10 accounting number, standard 10, that is property, plant and equipment. And instead of 8, before that research tha, so it will be now intangible asset, that is accounting standard 26, upgrade किया गया है. Okay, so they are removed from A6 and 8. अभी उसके numbers वापस change तो नहीं कर सकते. So they are permanently deleted and they introduced in another accounting standards, and therefore these numbers are not there. 6 and 8 are permanently deleted. Okay. After that, borrowing cost, 17 is segment reporting, 18 number related party disclosure, 19 leases, 20 earning per share, 21 consolidated financial statements, 22 accounting for taxes on income, 23 accounting for investment in associates in consolidated financial statements, 24 discontinuing operation, 25 interim financial reporting, 26 intangible assets, 27 financial reporting of interest in joint venture, then impairment of assets, and 29 is provision, contingent liability and contingent assets. So 2 standards are removed. So remaining kitne standards hai? 27. I give you challenge. I give you challenge for these accounting standards. कितने मिनट में आप करते हो और मैं दिखाता हूं आपको मेरा स्पीड बोलने का. एंड इट इज अ चैलेंज फॉर यू कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में एटलीस्ट 10 नेम्स तो भी याद करके आए, एटलीस्ट 10 नेम्स. ओके, बिफोर स्टार्टिंग एनी सेशन आई विल स्टार्ट विद द नंबर्स. कितना मिनट लगेगा हार्डली देखते हैं कितना मिनट लगता है. सो सामने आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और टिकटिकी जी जल्दी से प्रकट हो जाइए. ओके, एंड हियर नंबर 1 से शुरू करूंगा अप टू नंबर 29. यदि आपके फैकल्टी का जो स्पीड है उससे 20 सेकंड एक्स्ट्रा लीजिए. ओके, S1 disclosure of accounting policy, 2 is inventory valuation, 3 is cash flow statement, 4 contingencies and events occurring after balance sheet date, 5 number net profit or loss for the period, prior period items and changes in accounting policy, 6 number nahi hai, 7 number construction contract, 8 number nahi hai, 9 number revenue recognition, 10 is property, plant and equipment, 11 is effects of changes in foreign exchange rate, 12 number government grant, 13 number is accounting for investment, 14 is accounting for amalgamation and 15 number is your employee benefit. 16 number से आगे यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से. यस यार टाइम गया. ओके, यहाँ पे मैं पॉज कर लेता हूँ. हाँ जी, 16 नंबर पॉज करता हूं. 5 सेकंड प्लीज कम कीजिए. ओनली टू शो यू ऑन दी स्क्रीन. 30 सेकंड्स हो चुके. चलो, 16 number borrowing cost, 17 number segment reporting, 18 number related party disclosure, 19 number accounting for leases, 20 number earning per share, 21 is consolidated financial statement, 22 accounting for taxes on income, 23 is accounting for investment in associates in consolidated financial statement, 24 interim discontinuing operation, 25 interim financial reporting, 26 is intangible asset, 27 investment in joint venture, 28 impairment of assets and 29 provisions, contingent liability and contingent assets. तो मेरा टाइमिंग है 52 seconds and your timing will be less than 52 seconds. मुझे पता है is not possible starting phase में, but after certain revisions beta you can recall these accounting standard names. So don't worry. So all accounting standards at least try to recall names. एक बार आपको नाम याद आ गए तो बेटा काम is very simple. Okay. Yes, Upasna ji, maximum time I will speak it in English. Some students are asking me to speak it in Hindi. So both beta ultimately concepts will be in English and revisions will be in Hindi. Okay. Will these live classes be sufficient in case of we are not enrolled in any other classes? Yes, beta Rehan, why not? Ye classes are sufficient. Now institute also improved number of lectures or increase kiye hai. So beta definitely you will get good number of sessions. No, don't worry. By which month we are going to complete our syllabus, sir? I think before February or March, 15th of March तक अपना पूरा syllabus complete हो जाएगा. Not only for this subject. Die hard your fan, sir. Thank you, beta Parth. Your way of teaching is the best, sir. Okay, thank you, beta. There for revision with you. Okay. Yes. Good evening, sir. 27 accounting standards. Nisha,
यस बेटा, थैंक यू सर। S3 स्किप मत करना, मुझे डाउट्स हैं। ओके बेटा, राम ठक्कर, डोंट वरी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइन ICAI फैकल्टी। यस बेटा पवन, थैंक यू। यस, और कुछ होंगे तो बता दीजिए। यूर वन वे, आवर वे, यस आवर वे इज डिफरेंट। ओके बेटा, ठीक है। चलिए, एडिशनल क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड सर। ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम वॉचिंग यूर क्लासेस ऑफ माय फेवरेट सर। यस बेटा, थैंक यू चंदन सर। विल यू डिस्कस RTPs? यस बेटा। कैन वी गेट दिस नोट्स? डेफिनेटली, व्हाई नॉट बेटा, नोट्स आपको मिलेंगे। चलिए, सो नाउ कैन वी स्टार्ट? चलो जल्दी से, आपके कमेंट्स हो गए रहेंगे तो वी विल स्टार्ट विद अवर जर्नी, चैप्टर नंबर 1। चलिए, ओके, लेट्स मूव। So our first chapter is Introduction to Accounting Standards. How to remember these accounting standards? Okay. Daily 5 accounting standards you can recall, and daily 5 accounting standards you will learn it definitely over the period. It's not a journey of one day. It will take some time, but within 7 days, you can recall all these names of accounting standard. Don't worry beta, daily 5 accounting standards मैं आपको याद करवाऊंगा. So our journey is for 4 days in a week. तो अपना Saturday तक you can recall all names of this accounting standard. Okay. Yes. Overview of accounting standards. First one, in this chapter, first I will introduce what is the concept accounting standard, then how this standard setting process, how any accounting standard is set by the ICAI. Okay, तो आपको क्या जानना है? Standard setting process. After that, list of accounting standard that we already covered, all names of accounting standards, need for convergence to global standards. So now we are also adopting IFRS, but not as it is. Now what is not as it is? That we have to understand. That is global standards का need क्या है? International Financial Reporting Standards, that is IFRS. So what is exactly IFRS is? That word IFRS that we learn today. International Accounting Standard Board. Sir, in India, we have Accounting Standard Board. That is concept number 2. So similarly, we have International Accounting Standard Board at international level. And we are not following IFRS as it is. So Ind AS. So Ind AS के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा. I will tell you exactly how Ind AS is going to be effective in the India. Okay. Carve-outs and carve-ins and roadmap. Roadmap means 2016 se journey started, and now every listed company they adopted Ind AS. Okay. So roadmap for implementation of Ind AS. So this is how we are going to start in this chapter. तो आज का हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 1. आज का टारगेट क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 1. नाउ बेटा, after every 15 minutes, I will take your queries. I won't disturb my lecture. In between, if you comment also, beta, I will ignore that comments. I will give you proper 3 minutes in this batch. I will give you proper 3 minutes. You have to take some screenshots, but screenshots आपको करने की जरूरत नहीं है. Some things you have to write in your notebook. ये मैंने already किया हुआ है कि आपको notebook में क्या लिखना है. ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको 15 मिनट्स के बाद दूंगा. सो आफ्टर एवरी 15 मिनट्स आई विल टेक सम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, एंड आफ्टर दैट बेटा यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट. आई वोंट गिव यू नोट्स बिकॉज सब कुछ आपको नोट्स थ्रू नहीं मिलेगा. व्हाट यू हैव टू राइट इट इन 100 पेजेस. यस, नोट्स आई विल प्रोवाइड यू, बट 100 पेजेस नोटबुक यू हैव टू प्रिपेयर बाय योर ओन. और ये 100 पेजेस की बुक मैंडेटरी है. आफ्टर द सेशन, please don't ignore this message. After your session, 100 pages ka book you have to maintain it compulsorily. I will show you some students ka notebook.
तो वो लोग कैसे लिखते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू फॉलो दैट टेक्निक एंड राइट यूर 100 पेजेस का बुक ऑन डेली बेसिस. इट्स नॉट फॉर माई सब्जेक्ट, यू कैन फॉलो दिस टेक्निक फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ओके, 100 पेजेस का बुक मेंटेन करना. इट्स अ समरी बुक. ओके, चलिए. आशीष शर्मा बोल रही है सर हिंदी में बोलिए, एंड सम स्टूडेंट्स आर सेइंग मी टू स्पीक इट इन इंग्लिश. अभी देखो कितना कंफ्यूजन है. सो बेटा प्लीज डोंट वरी, रिविजन आई विल टेक इट इन हिंदी, डोंट वरी. यस, आज का रिकॉर्ड बैक लेक्चर होने दीजिए. यस यू प्लीज आज के सेशन में शेयर इट टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स. जितने भी स्टूडेंट्स है ऑल ओवर इंडिया के आपके फ्रेंड्स लोग हैं, शेयर कर दीजिए कि यस वी हैव टू फॉलो आईसीआई वे एंड आईसीआई बेस्ट. तो ये याद रखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल. और ये मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी एक बार आदत लग गई तो वो छूटने वाली नहीं है. यस एवरी वन ऑफ यू. तो प्लीज फॉलो आईसीआई क्लासेस ओनली. चलिए. ओके, so first we are going to start with the introduction part. So what is the introduction of accounting standards? See, generally accepted accounting principles. Accounting standards means accounting principles. So you should know, or your reader of financial statements, they must know what you are following. So that is the accounting principle. Okay. Common set of accepted accounting principle. I will show you one report. एक रिपोर्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. ओके, अभी आप ये रिपोर्ट देख लीजिए. यू विल अंडरस्टैंड इट. हाँ जी, आई विल शो यू इंडियन टोबैको कंपनी एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2016. यू कैन सी हियर दीज आर सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स है. Convention. So this is how you have to write your financial statement. See, financial statement means what? Financial statement means balance sheet, P&L, cash flow statement, notes to accounts and accounting policies. 5 चीजें आती है. So notes to accounts, and now this notes to accounts, these accounting policies, what you are following, that you have to tell to your reader. आपको किसको बताना है ये चीज? आपके रीडर को बताना है, यूजर को बताना है. This is what we are called as notes to the financial statement. So this is ITC report. It is a corporate policy. Convention. Convention means what? To prepare financial statement in accordance with applicable accounting standards in India. And a summary of important accounting policies set out below the financial statement. So this you have to write. And this is how you will prepare your report. Basis of accounting. We are following accrual concept. Okay. So basis of accounting in accordance with the historical cost. तो आप लोग यहाँ पे देखो, the word which is called as historical cost. Now what is historical cost? ये हमें लोगों को बताना पड़ेगा. What is convention? Okay, concepts, fixed assets, as and when they are undertaken. All assets and liabilities are classified as current or non-current as per company normal operating cycle. So these words, current, non-current, you should know. Okay, reader will understand it. Definitely, but you have to present in the simple way. But before starting this phase to write these things, you must know what are accounting standards. तो ये लिखना आपका काम है. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? तो ये रिपोर्ट बनाता है. ये रिपोर्ट कैसे बनाना है, इसका हेल्प हम लोग लेते हैं थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये रिपोर्ट हमें सीखना है. What we have to learn in this Ind AS, accounting standards, what we have to understand, how to prepare these notes. Chartered accountant has to understand. While becoming a CA and after becoming a CA, you will prepare financial statements of corporates. And therefore, you must learn what are generally accepted accounting policies. Okay, understood? These are common set of accepted accounting principles, standards, and procedures. Definition याद करो. Common set of accepted accounting principles. Common set. Okay. So inventory valuation,
applicability, what is given in the accounting standard 2, it is applicable for Reliance company also and ITC also. टाटा के लिए भी होगा and small कोई कंपनी होगी उसके लिए भी होगा, जैसे कि हनुमंत एक कंपनी है. So that will be also, yes beta, here common set of accepted accounting principles, standards and procedures that entity must follow while preparation and presentation of financial statements. Sir, what are financial statements? Balance sheet, P&L, cash flow statement, statement of changes in equity, and notes to accounts. So these are financial statements. And while preparing this, we must know common set of accepted accounting principles, standards, and procedures. Got the concept? What is general accepted accounting policies? At international level, and it is called as IFRS. इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? IFRS, International Financial Reporting Standards. And at national level, we are calling it as, in India, accounting standards. See, accounting standards are different and Ind AS is also different. So both are better different things. So first thing come to your mind, AS are different and Ind AS are different. Ind AS bada bhai hai, big brother, and small sister you can call it for accounting standards. So we have two set of accounting standard. One is AS and second one is Ind AS. So chalo likho comment section mein, in India we follow accounting standards and Ind AS. Chalo likho comment section mein, every one of you write it in comment section, accounting standards and Ind AS. Okay. Okay. Chalo. SOC explanation. Yes, but I will. Statement of changes in equity. Statement of changes in equity. So in India, yes, very good. We follow. Please be interactive. नहीं तो बोर हो जाओगे. Accounting standards, I won't say it is very, boring journey, but yes, कोई भी accounting standard को इतना प्यार नहीं करता है. So you have to understand, you have to create interest in accounting standard. And accounting standard, if you think it is now, it's like theoretical subject. Yes, now it's not, no more, it's a practical. NPO jaisa, income expenditure, then we will prepare balance sheet. No beta. Now syllabus is changed. Okay, and you have to take interest in this subject. Or interest lana mera kaam hai. Okay, but 2.5 hours, daily basis pe, you have to sit on one place. Okay, so only one thing I require from you. You promise me all, कि yes sir, kuch bhi hone do, we will attend these sessions. We will attend these sessions mandatorily. So accounting standards and Ind AS, there are two categories. Very good beta, very good. Every one of you beta have written this. Chalo, बहुत बढ़िया. Yes, and though you already attended some sessions of any faculty, पर बेटा don't miss these sessions. Okay, extra knowledge हमारे से लीजिए, board of studies के faculty से. Might be this thing happens कि you will understand this is more interactive session, and instead of joining बेटा face to face classes, what happens, your maximum time here, ये देखो all India level के ये faculties है, all faculties. So institute भी चुन के लाता है, मैंने पहले ही बोल दिया. ओके, और सब बेस्ट नॉलेज देने वाले फैकल्टीज है, तो आने जाने का टाइम भी होगा. इफ यू आर फ्रॉम स्मॉल सिटी, यू कैन अटेंड इट, यू कैन सेव योर मनी ऑफ योर पेरेंट. नो वन गिव्स गारंटी ऑफ सीए कोर्स. ओके, नो वन गिव, इट्स ओनली यू हु विल गिव रिजल्ट. इफ यू आर कंसिस्टेंट, यू विल गेट द रिजल्ट. पहले 2 दिन में कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 8 months, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट. ये याद रखिए. ओके, चलिए, प्रॉमिस है, आप सबका मुझे प्रॉमिस है. यस, नो वन विल मिस दिस सेशन, नो वन. जो अटेंडेंस आज है वही अटेंडेंस लास्ट डे तक होगा. ओके, एंड प्लीज गिव फीडबैक्स.
Please give feedbacks. Okay. And feedbacks are very important. Always. तो आप जितना फीडबैक दोगे उतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज आपको मिलेंगे. ओके. चलिए. Accounting standards are policy documents issued by, first one, government. This policy documents, MCA. Now what is MCA? Ministry of Company Affairs, and in consultation with NAFRA. Now what is NAFRA? National Financial Reporting Authority. Okay. So yahan pe NAFRA is like Institute of Chartered Accountants. They prepare accounting standards for non-corporate entity, but for company level, ICAI for non-corporate entity, write down it in the comment section. ICAI prepares accounting standards. Okay, sir, government is also preparing accounting standard. It is similar. Ultimately, Institute of Chartered Accountants से data लिया जाएगा, and NAFRA, yes, we will pass it in Parliament, or accounting standards are then applicable for corporate entity. See, government has watch over, okay, that Ministry of Company Affairs has watch over these accounting standards. So, yes, ICAI definitely helps them. But in consultation with NAFRA, they have different regulatory authority. Okay. So, National Financial Reporting Authority is different. And our institute prepares accounting standards, but it is applicable for non-corporate entity. For example, individuals, HUF, then partnership firms, then your association of persons, BOI. So all this covers under non-corporate entity. Okay. In income tax, we are going to learn this. But ICAI gives accounting standards. Yes, sir. We know that ICAI issues accounting standard. But wait, when it is applicable for company, then MCA, with consultation with NAFRA, they called it NAFRA, and in consultation with them, they issue accounting standards. So दो चीजें याद रखनी है. इंस्टीट्यूट जो है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स इन कंसल्टेशन विथ नफरा दे इंट्रोड्यूस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. यू गॉट द कॉन्सेप्ट? यस, से यस और नो इन कमेंट सेक्शन. चलो. सो कंपनी अफेयर्स किसके लिए होता है बेटा? Very good. For corporate affairs, it's MCA with consultation with NAFRA. And for non-corporate entities, it is ICAI. So accounting standard who issues, not SEBI. तो ये दिमाग में रहता है कि सर कंपनी होगा तो SEBI. No बेटा. ICAI introduce accounting standards. I will show you website. We have one committee for accounting standard board, जिसके कौन मेंबर्स है, who is the chairman, that you will understand on our site. I will show you exactly where you have to see this accounting standard, bare text. But bare text definitely difficult to understand, and therefore by making it is simple, by making a chart, we make it very simple, and you will learn it from its in simple form. And when you are able to read bare text, then better you understood accounting standard in detail. ये याद रखो. If you can read from bare text, then better your accounting standard knowledge is improved. ये याद रखना. चलिए. Okay. सर एडवांस अकाउंटिंग में थ्योरी ज्यादा? यस बेटा, अभी थ्योरी ज्यादा होगी. दो वॉइसेस आ रहे हैं. सो दो वॉइसेस आ रहे हैं क्या? टेक्निकल टीम प्लीज चेक इट. दो वॉइसेस आ रहे हैं क्या? अशोक जी, दो वॉइसेस आ रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि कुछ क्वेरीज थे. नो. ओके, वॉइस इज क्लियर. ठीक है, चले. Accounting standard deals with, now this is very important point, RMPD analysis. RMPD. चलो 4 बार बोलो. RMPD. Okay. Voice is clear.
R for recognition of events and transactions. चलो याद करो. R for recognition of events and transactions. M for measurement. P for presentation. And D for disclosures. Okay. So RMPD analysis. RMPD analysis. R for recognition. M for measurement. T for presentation. And D for disclosures. So tell me full forms beta. Chalo RMPD. Yes, without looking into slide, you can tell me what is the full form. RMPD ka R for recognition, M for measurement, P for presentation and disclosures. Please be interactive. Please comments को type करते रहो. भले हाथ कितना भी दुखने दो. Yes, if you have pain also beta, please type it. So it will be very interactive. Okay, every one of you. Try to write all these answers. चलो जल्दी जल्दी लिखो. Recognition, measurement, presentation, disclosure. Recognition, measurement, presentation, disclosure. Okay. So RMPD analysis. Haji sir, RMPD analysis is very interesting. RMPD. Okay. Recognition, measurement, presentation, disclosures. Benefits of accounting standards. Sir, what are benefits of accounting standards? Now, after understanding these slides, okay, you can refer your study material and you will get each and every concept in detail. Okay, if you read your study material after the session, it will be very easy for you. You can recall all these concepts. I made it very simple. Okay, chaliye. So, RMPD analysis mein R stands for recognition, M for measurement, P for presentation, and D for disclosures. What are the benefits of accounting standards, sir? First one, you can recognize these standards. You can, benefits का slide थोड़ा सा गलत हो गया है. Okay, benefits of accounting standards. I will show you what are benefits of Ind AS. Or S. Okay. What are benefits? Yes, you can summarize from here. Chalo. Standardization of alternative accounting treatment. So benefits, standardization. Whenever there is a confusion, okay, so there is a lot of confusion beta when you want to reach at one level. You may get 4-5 roads. Google Map आपको 4-5 roads बताते हैं. Correct है? So now that will be a confusion. Which route I should consider? So accounting standards gives you standardization of alternative accounting treatment. When there are n number of options, Institute of Chartered Accountants, they better introduce accounting standards which will give you standardized method for accounting standards. Okay. तो ये याद रखो. Requirement for additional disclosures. Requirement for additional disclosures. Okay. So what you have to disclose it? More to your investor that you are getting it from accounting standards. Third point, you can compare your financial statements, comparability. And last one, reduction of scope of creative accounting. Reduction of scope of creative accounting. तो एकदम ऐसा है ना, एक बार आईएएस आ गया तो समझ लेना आप लोग क्या कर नहीं पाओगे, क्रिएटिव अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे. सो वन पॉइंट, यस, वन टाइम इन हिंदी, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. चलो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं हिंदी में, जो अब तक हुआ है वो क्विकली रिवाइज करेंगे. देखो बेटा, ओवरव्यू क्या बताता है. ओवरव्यू तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, गैप मतलब क्या? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? तो ये कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं. सर इसमें सब रूल्स है जो इकट्ठा करके ऐसा स्टैंडर्ड का बंच है पूरा,
ये सभी स्टैंडर्ड्स है ना, ये आपको दिए गए हैं। किसने दिया? तो इन्होंने एट इंटरनेशनल लेवल होता है तो आईएफआरएस बोलते हैं, ये उनके भी रूल्स है बेटा। जैसे रूल्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो तो अकाउंट्स बनाते टाइम क्यों नहीं होंगे रूल्स? तो वो रूल जो होते हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे कौन देता है? तो आईएफआरएस देता है। एक बार हिंदी में पूरा समझ लीजिए। और एट इंडियन लेवल पे कौन देता है बेटा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस, ये दो तो इकट्ठा है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इंड एस क्या होता है, इसके लिए थोड़ी देर के लिए रुकना है आपको, थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा एस क्या होता है और इंड एस क्या होता है। अभी उसके बाद मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कौन फॉलो करता है, तो कौन बनाता है, फॉलो नहीं करता है, बनाता कौन है? तो नॉन कॉर्पोरेट लेवल पे होगा तो हमारी डियर इंस्टीट्यूट, हमारी प्यारी प्यारी हमारी माता, ये बनाती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये बनाती है हमारे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक हालांकि एक सीक्रेट बता देता हूं, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट है, ये आपको नफरा के इसमें भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकलेंगे, पर गवर्नमेंट कंपनी का आंख जिसकी है वो उसके ऊपर वॉच किसी और का है, तो एमसीए उनके ऊपर वॉच रख के रखा है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, उन्होंने तो कंपनी लॉ लाया हुआ है, तो उनके कंसल्टेशन में विथ नफरा के कंसल्टेशन के साथ वो दोनों इकट्ठा आके उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं। हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है, जो हम लोग सीखने वाले हैं वही है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो डील करती है, तो हमें चार चीजें याद रखना है कि स्टैंडर्ड्स को चार पार्ट्स में से आगे बढ़ना है। पर सर कुछ स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्क्लोजर होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिर्फ डिस्क्लोजर होते हैं। सो आरएमपीडी एनालिसिस आपको याद रखना है। आरएमपीडी का एनालिसिस का मीनिंग होता है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, आरएमपीडी एनालिसिस। तो कोई भी स्टैंडर्ड ये पहले रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज मतलब एंट्री को करना है क्या नहीं करना है, फिर उसकी अमाउंट, अमाउंट के बाद किधर प्रेजेंट करना है, और वो पॉलिसी हमने जो अडॉप्ट किया उसको डिस्क्लोज करना, रिकॉर्ड करना, एंट्री को रिकॉर्ड करना, अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करना, कहां पे प्रेजेंट करना, एंड लास्ट में डिस्क्लोजर। सो दिस इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद। और बेनिफिट्स क्या है? चार बेनिफिट्स है सर, याद करो चार बेनिफिट। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर, कंपेरेबिलिटी, एंड चौथा आएगा रिडक्शन ऑफ स्कोप फॉर क्रिएटिव अकाउंटिंग। सर एक प्रोसेस को स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एडिशनल डिस्क्लोजर क्या चाहिए ये भी एस ने बताया, कंपेयर भी कर पाए आप रिपोर्ट्स को, इंट्रा कंपैरिजन और इंटर कंपैरिजन, और रिडक्शन ऑफ स्कोप फॉर क्रिएटिव अकाउंटिंग। ये चार चीजों जो है वो बेनिफिट्स में आते हैं। नाउ यस, योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स। नाउ बेटा up to this point if you have any query you can ask me। मैंने अभी बताया था कि I won't take your queries, सिर्फ आपको मैंने पूछे थे। now your queries, if you have any query till now, otherwise बेटा tell me clear, I will go to next concept। okay, ठीक है। और प्लीज साउथ इंडियन स्टूडेंट्स प्लीज bear for some time, revisions will be in Hindi, that will be helpful for all over India students, and your concepts, if you have any problem in concept you can give it me in comment section, so I will explain you it further, don't worry। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, पल्लवी शर्मा। कुछ भी डाउट्स होंगे तो बताइए। एक ही मिनट में पानी का बॉटल लेके आता हूं बस। ओके चलो, सो बेटा बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जर्नी इज ओवर। Nafra consults with ICAI also, sir. Yes, sir. Can you explain creative accounting, sir? Creative accounting means you are recording asset as expenditure or expenditure as an asset. That is the creative accounting. बहुत महान लोग होते हैं ना अकाउंट्स करने वाले, तो वो कुछ भी अकाउंटिंग कर देते हैं, तो उनके लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बीच में आना पड़ता है। ओके, रिडक्शन ऑफ द स्कोप, रिडक्शन ऑफ द स्कोप
yes, of creative accounting means you cannot do this कि मन में आया वैसा accounting नहीं करोगे, so you won't do that. So that is called as creative accounting. Additional disclosure means apart from basic disclosure, every accounting standard at the end tells what you have to disclose in your reports. It's not only a point of entry, but you should disclose what policy we are following. And that is additional disclosure. Sir, how many marks theory do we have? So almost now it's paper of accounting standards. 60 to 65 weightage marks weightage of accounting standard and remaining consolidation and all. Yes, beta, that question you will get. Don't worry. एडिशनल डिस्क्लोजर्स क्रिएटिव अकाउंटिंग में मैंने बता दिया. सर गैप और आईएफआरएस डिफरेंट है. हाँ रुको सबर करो बेटा, बताऊंगा मैं, डोंट वरी. सर टीच ऑडिट ऑल्सो. ए बेटा अच्छे अच्छे फैकल्टी से, डोंट वरी, दे विल टेल यू. एमसीक्यू का मैं आपको बताऊंगा बेटा बाद में. Sir, only 3 benefits. Yes, beta, 4 benefits you can do. Yes, take 4 benefits or you can follow institute ka material in which only 3 benefits are there. Sir, chapter wise weightage. Yes, beta, I will tell you afterwards. और कुछ शक या सवाल, any doubt till now? Sir, topics you explained, do we have to remember like word to word? Yes, beta, some points you have to by heart. That by heart point I will tell you. Don't worry. That by heart point I will tell you. Rattamar points. Called it as Rattamar. Yes. I will give you in every standard all Rattamar points. No doubt, sir. Sir, creative I already explained. I am from SRO. Now it's understanding Hindi. Thoda thoda. Karthik ji. Yes. Karthik ji. Sorry. Karthik ji. Yes. Thank you. Sir, will you teach all accounting standards? Rita, ICAI Board of Studies, other means ICAI decides all faculty list. So if they give me this opportunity, yes, definitely I will teach. And yes, I already told you to give feedback forms. Okay, feedback forms में सब समझ में आ ही जाएगा. Sir, what about mock test? Beta, please wait. Sabina ji, this is not the right platform. Mock test will be announced shortly by institute. Sir, do we have any advantage over new scheme? But a new scheme is always preferable because only 6 subjects are remaining and you will get some extra knowledge. So, and your articleship starts after only passing of your 2 exams, 2 groups. So better, definitely your articleship time is also reduced. So these are some advantages of new scheme. So I won't give pros and cons of new scheme. So definitely you have advantages. Whether to take both groups or single group? Definitely both groups beta. Don't think for a single group. Hi sir, kindly teach in English and go very slow. Yes beta. Yes, I will go slow wherever I think. Sir, please explain notes to accounts and statement of changes in equity. But I will show you at the end. Sakshi ji, wait for some time. I will show you exactly what are notes to accounts and what are. Yes. Can we take some important points of screenshots? हाँ sir, wait for some time. I will give you screenshots also. अभी तक कुछ बाकी के सवाल है तो बता दीजिए. Otherwise we will move further. Yes, 7:15 को I will give you break. 7:15 to 7:30. ठीक है, 7:15 to 7:30. 15 minutes का break. But before that we have to understand how to set the accounting standard by institute. So accounting standard institute set कैसे करती है. Recorded lectures will be available, but I won't prefer recorded lectures. Always try to attend it in the live session. Live session, you can interact with the Sanket sir, and this is how what is important. So don't refer recorded lectures, but sometimes if you have any medical emergency or family emergency, then you can go for the recorded one. But beta, recorded lectures में 2.5 hours betna is not possible. To sit on one place for 2.5 hours is really not possible. So I won't prefer recorded lectures, and you have to improve your stamina. Yes, definitely. For sitting place on one place, it's very, very important. And whenever you are attending my lectures, don't attend it from bed or anything. Beta bistar se attend mat kijiye or sofa. Please sit on your table and chair. Okay, chair पे बैठ के table, ये 2 चीजें जरूरी है जिसके ऊपर आपका स्टडी होना चाहिए. If you respect, क्योंकि I have seen my बेटा दक्ष, तो दक्ष को मैंने हमेशा पढ़ाई करते हुए देखा है, तो मैं बहुत चिल्लाता हूँ उसको. सोफा पे बैठ के आराम से सब बेड पे लेट के पढ़ता रहता है, बट जैसे ही मैं आता हूँ तुरंत टेबल चेयर पे आ जाता है. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट.
आप रिस्पेक्ट दोगे सरस्वती को तो सरस्वती आपको रिस्पेक्ट देने वाली है, इतना याद रखिए। सो ऐसे पढ़ाई नहीं करने का, टेबल चेयर पे ही करने का। ओके, अदर थिंग्स। सर विल यू शेयर दिस पीडीएफ? सर नो ब्रेक सर, चलने दो सर क्लास। नो बेटा दिव्या कुमारी, बीच बीच में ब्रेक जरूरी है। एसओसी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर एवरी चैप्टर वी हैव टू मेक 100 पेजेस। अरे एवरी चैप्टर को कैसे 100 पेजेस की बुक करेंगे? वी हैव टू राइट इट इन 100 पेजेस बुक। बेटा ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो रे बेटा आप लोग? 100 पेजेस के नोटबुक में आपको लिखना है ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इतना वाहियात क्वेश्चन था ना। लिखना कब है सर? लिखना घर पे है। यस, चलो नेक्स्ट वन। Now we will move to next part. See beta, these are some notes to accounts. Convention for this ITC report. I have shown you. Basis of accounting. Depreciation. So what you are exactly following. So this is what given in every annual report. आपको every annual report में ये मिलेगा. Fixed asset. Inventories. So these are some notes. Okay, now if you see Bajaj Finance Limited ka notes, so you'll get basis of preparation, use of estimates, then they have property, plant and equipment, then they have depreciation. So these are some accounting standards. Earning per share S20. Okay, so this is how you have to understand notes to accounts, that is disclosure part. This you have to disclose in every annual report. See the annual report, I will show you the annual report. ये देखो बेटा, ये होता है annual report. See every accounting standard I will show you from the annual report. Once you can read this annual report, if it is easy to read the annual report, you can solve any question. Okay, देखो, yes, you can see here. These are some notes. Balance sheet, profit and loss account. Yes, I will show you. This is the number of pages, more than 100 pages. You can see the annual report, only financial statements. Report of board of directors and all these things, beta. These are annexures, reports वगैरह तो नहीं. Okay, remuneration. हाँ जी sir. Board of directors के बाद हाँ. Now this is auditor's report. See, first auditor gives this certificate. Independent auditor's certificate. So here to members. Members means normally shareholders. Okay. So in this you will get the balance sheet. Balance sheet ka pro forma you can see here. Equity and liability, shareholder fund वगैरह, which you already studied at foundation level. Then you have P&L statement. Then you have P&L statement. After that you have cash flow statement, third statement. Cash flow, operating activity, investing activity and financing activity. Then after that, statement of changes in equity. What is the share capital at the beginning and what is at the end? So these are statement of changes in equity. And after that, you have notes. In notes, you will learn all numbers. What is, how share capital derived, how reserves and surplus, and then finally disclosures. Okay. So extra disclosures given by the company. How they are following accounting standards. Okay. Which policy they have accepted. So that they have to give it in the writing. Okay. So these are disclosures. So this is how your financial statements are prepared. Every member will get this financial report in their annual report of every company. You will get this report. Okay. Balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, statement of changes in equity and notes to accounts. Okay. Now clear. Everyone is clear with this. Ki what is exactly disclosure? Disclosure is nothing but what policy you have followed. आपने कौन सी policy follow की है उसको दिखाना. इसको हम लोग बोलते हैं disclosures. Okay. चलो बेटा लास्ट में आई विल टेल यू कौन से इसमें लिखना है. ओके. यस बिलास, यू आर इंटरेक्टिंग ऑन द करेक्ट प्लेस.
Now I will teach you what is the standard setting process. Standard setting process क्या होता है? Now listen it carefully. How accounting standards are set by ICAI. Okay, Institute of Chartered Accountant of India, how they set any accounting standards. ICAI took leadership role in constituting ASB. Now, what is Accounting Standard Board? Yes, you can see our website पे आ जाओ, हमारे website पे आ जाओ. Yes, Google. ICAI, हमारी प्यारी प्यारी वेबसाइट ICAI.org. On this, if you see here, committees पे क्लिक करने का, and first committee you will know this is Accounting Standard Board. CA प्रमोद जैन, ये हमारे चेयरमैन जी है. ओके, और ये हमारा हर साल ये चेंज होते हैं. ओके, इंस्टीट्यूट की बॉडी हर साल बदलती है. सो अभी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पे वी हैव CA प्रमोद जैन जी. यस, यू कैन सी हियर. देन यू हैव अदर मेंबर्स. प्रमोद जैन सर के साथ अभय सर भी है, वाइस चेयरमैन छाजेड़ जी, हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे वाइस प्रेसिडेंट. सो दे आर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी बोर्ड. देन टॉर्च बेयरर्स ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स सिंस इंसेप्शन. तो इनकी एक लिस्ट है कि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन थे. यस, 15, 16, 16, 17, 17, 18 एंड नाउ 22 तक. यस, MP विजय कुमार सर, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. जावरे सर हमारे पुणे से बेटा, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में. टॉर्च बेरर में आते हैं ये लोग, और इनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे है. तो इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है ईयर वाइज. यू कैन सी हियर. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज हाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है. Okay, you can see in members, no, sorry, in committees, accounting standard boards में आपको सब कुछ ये मिल जाएगा. You will get educational videos in this, effective date of Ind AS amendments वगैरह जो भी है, you will get everything which is new इधर आपको मिल जाएगा. Exposure draft. Now see what is the exposure draft volume 11 issued by ISB. See beta, this is next level. I won't say you understand all these things at intermediate level, but at least you must know, because this is very vast journey. एक समंदर है. Okay, so very big journey of accounting standards, but we have, you know, very little or very small things to understand. Okay, we do not have in exact details all these things, because 29 accounting standards to learn in the 8 months itself is not possible along with other subjects. Okay, so I will give you insight for this subject. It's not possible that every time I will give 100%, you know, depth knowledge. It's not possible. And don't try to take depth knowledge now. First, start your articleship. And in articleship, you can go in detail. First, your focus is always how to clear my both groups. Okay, in first exam is my clear thought कि मेरे 2 ग्रुप्स होने चाहिए, and I should start my articleship as early as possible. चलिए, कहां पे थे हम लोग? स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. हाँ जी. So you now understood. So ASB is our ICAI का body, separate committee for this, took leadership, जिनके chairman है प्रमोद जैन sir. Okay, in the leadership role in the constituting accounting standard board. Accounting standard board considers IFRS at international level. They can compare it now, what is going on the international level. Okay, and at international level we have 2 sets. Like in India we have AS and Ind AS, but here
Ind AS are totally different, and AS are totally different. But IFRS and IS in combine, we will call it as whole international standards. Okay, so we consider, our board considers, क्या कंसिडर करता है हमारा बोर्ड? IFRS and IAS while deciding it at globalization level. Composition of ASB includes, ASB accounting standard board में includes some industries association and government department also. Although accounting standard board is constituted by ICAI, it is independent for formulation of accounting standard board. ICAI का role only for ASB, formation of ASB, but ASB has right for implementation of any accounting standard. Okay. NAFRA के साथ, already I told you, NAFRA recommends these standards to MCA and consultation with Institute of Chartered Accountants, and then MCA has to spell out this accounting standard applicable for companies in India. तो इंडिया में जो भी applicable standards होंगे, MCA इनको applicable कर देती है all over Indian companies. Okay, so this is how our journey starts. Okay, so accounting standard board, कौन सी bodies involved है? Accounting standard board. Okay. Yes, then ASB considers IFRS, then composition of accounting standard board. Although ASB, NAFRA and MC has to spell out as applicable for companies in India. Okay. Sir, have you read from MP Vijay Kumar book? हाँ sir, I followed MP Vijay Kumar sir also, Zaure sir also, then साउथ के जो पादुका प्रकाशन के जो फैकल्टीज थे, मैंने उनका भी बुक्स पढ़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों के बुक्स पढ़े हुए हैं. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने बहुत सारा सोर्स पढ़ा हुआ है और तब जाके ये इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है. ओके, चलो नेक्स्ट वन. यस बेटा, राहुल शर्मा, डेफिनेटली. Okay. So now what is the standard setting process? Sir, accounting standard board, one time I will tell it in Hindi. Some students are asking me for explain in Hindi also. So see बेटा, एक आईसीआई जो है वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के हमारे चेयरमैन है, कौन है बेटा? प्रमोद जैन सर है. तो उन्होंने बेटा, उनके अंडर एक कमिटी फॉर्म होती है. उनके अंडर ये कमिटी फॉर्म होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बाहर के कंट्रीज के भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रीड करते हैं और इंडिया के भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके बेस पे बनाते हैं. फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लाने के पहले गवर्नमेंट बोर्ड से भी, इंडस्ट्री से भी लोगों को लिया जाता है कि उनकी दिक्कतें क्या है, उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है. उधर से सब लोगों को उठाया जाएगा. सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहने वाले, सभी लोग रहने वाले वो कमिटी के. इसमें एज अ टॉर्च बेरर में नहीं बोल रहा हूं, पर कमिटी के पार्ट होंगे. और ये कमिटी के पार्ट में से क्या होगा, फिर इंस्टीट्यूट जो है वो एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगी. फिर उसको नफरा के साथ रिकमेंड किया जाएगा और वो नफरा जो है वो एमसीए को बोलेगी कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाओ, और फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होता है कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए. और देखो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है ना बेटा, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, पर लोग इतना डिटेल में, मतलब एकदम डिटेल ऐसा नहीं बोल सकते, स्ट्रिंजेंट नहीं होते. पर कंपनी जो होती है ना, वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है. ओके. और देखो, कंपनी में इन्वेस्टर्स होते, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के इन्वेस्टर्स आर बेटा स्मॉल लेवल पे होते, पर कंपनी में लाखों शेयर होल्डर्स होते. तो वो लोग जो है ना, उनको डिटेल, जिसके ऊपर भरोसा रखा जाए, ऐसे ही रिपोर्ट बनाने वाले लोग चाहिए. और हम लोग वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे जिनके ऊपर एक भरोसा रखा जाएगा. ओके. तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और ये नॉलेज होगा तो ही हम लोग वो रिपोर्ट्स बना सकेंगे. इसीलिए तो हम लोग ये सीख रहे हैं. टिल नाउ एनी क्वेरी? स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. चलो अभी स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को देख लीजिए. सी, सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? यू हैव टू आइडेंटिफाई एरिया. एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है. Identify the area. So first thing, so this is the process. Then
area in which you need accounting standard. Then you constitute the study group. Study group को constitute कीजिए. Prepare one draft. Okay, prepare one draft. Taking views and feedback. Finalize the draft. Modify the exposure draft and then issue accounting standard. So slowly, break me, you can recall it. Identification of area where you need accounting standard. So there are two different accounting policies. Okay. Two different accounting policies. Some people, they record it as expenditure and some people, they record it as asset. Some accountant, they record it as expenditure and some accountant, they record as an asset because there is no standard procedure. Okay. Rent, everyone will record as expenditure. But see, now any such expenditure, for example, interest. Now interest is also capitalized. Accounting standard 16 requires it. Okay. Sir, interest to P&L mein jata hai. It's a revenue expenditure. Wait. Sometimes interest is a capital expenditure also. So two different accounting policy. One is called it as expense and second one, they called it as an asset. So there are two different thinkings. Okay. So whenever there is a fight for between accountant, so beta accounting standard board institute will come into the picture. So institute आया, institute formed one group, institute formed one study group. Then beta they prepare one draft. उन्होंने एक draft बनाया कि yes, this is how you have to treat. Suppose interest is when to be capitalized and when to interest is recorded expenses. So they prepared the draft. They are taking views and feedbacks. It is open to all. Okay. So you can see on website also. Website के ऊपर आपको यहाँ पे देखो exposure draft for annual improvement. So this is how institute has given it on the website. तो website पे आपको मिल जाएगा. So this is the exposure draft. This is not the final draft. Okay. So exposure draft means not a final draft. Okay. So after getting comments, institute may modify that exposure draft and after exposure draft, it will get converted into accounting standards. See the process. It is not one day decision. It takes a time. First, institute will study that accountants, they are doing two different accountings. They think, yes, we need one accounting standard. Everyone should need this accounting standard. They should know how to record it for. For example, now suppose inventory valuation. Some accountants are doing FIFO, some accountants are doing LIFO, some accountants are doing weighted average. So institutes come into the picture. Once you follow the policy, you have to accept it for next years also. So expenses. So here we need Ind AS, accounting standard 2, inventory valuation. Okay. Some standards are only disclosure standards like AS3 cash flow statement, AS20 earning per share, AS24, AS25, AS17 are some disclosure standards. Then institute prepares one draft. Then draft is open for taking views and feedbacks from expert people. Then this draft is finalized. Then it is presented on the website. Website के बाद भी modify हो सकता है. Then still comments received by the general public. Okay, don't give comments. Basically, immediately don't give comments. First be expert on this field and then issue accounting standards. And then finally, you have to study that accounting standard. This is how process is there. Okay. How accounting standards, institute issues accounting standards, at which level and how it is institute commence with the accounting standard or how they introduce accounting standard. Yes, this is a process. I hope everyone is happy with this process. Now everything. So what is the new thing you understood today? Yes, but आज नई नई चीजें क्या समझी आपको? Exposure draft means rough draft beta. Rough draft. Okay. Yes, Yogvinder Sundarti. Are Bapre. Yog Vishnu Tharni. Okay. South Indian students, please sorry if I have taken wrongly. Yes, wrong pronunciation in your name. Sir, I'm your fan. Please take classes in English. I cannot understand Hindi, beta. I normally take classes in English only. Only revision part will be in Hindi. Please try to understand because
some students, they are not understanding English immediately, and institute also has two options. One is English and one in Hindi. We are not started with Hindi classes, so sometimes I have to explain it in Hindi also. Please spare some time. Okay, please try to adjust here. Exposure draft. Yes, exposure draft is ED. और कुछ आपको मुझे पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा, जल्दी जल्दी प्लीज. Have patience till last minute. We will complete today first session, first chapter, and yes, now you take a screenshots. If you have any question, what is the constitution of study group? So study group means they prepare one study group. Here you can see institute के board पे study group is there. Okay. Torch bearers are different. Educational videos, you can see effective date of Ind AS, then announcement, IFRS publication, Ind AS implementation, research projects, accounting standard status outside India. तो ये देखो इनके साथ अपना टाइप है बेटा. ओके, देन डॉक्यूमेंट्स ओपन फॉर कमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्कुलेशंस. और ये देखो ये कुछ लिस्ट दी थी जो टॉर्च बेयरर्स हैं. And there are study groups means beta they are continuously doing study of accounting standards. Okay, so this is how they form one group. So they will discuss all these things where they need accounting standards, and SB conferences and events will get on this. Yes, तो आपको ये सब वेबसाइट पे मिल जाएगा. वेयर टू सी बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की एक अपना ये है, उसके ऊपर आप लोग ये अच्छे से देख सकते हो. ओके, हियर यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. यस, are you finding it interesting till now? Tell me it in comment section beta. After that we are going to see list of accounting standard we have already completed. Then beta we are going to see what is need for convergence to global standards slowly. So what you have to write it in 100 pages book today. Okay, 100 pages cha notebook la. Yes beta. Yes, today you copy all these things in your 100 pages book. Yes, overview you can write over there. अदरवाइज ये देखो, एक सेकंड ये मत करो. ओके, you can take a screenshot till now. This you have to write it in your 100 pages book, all these things after the lecture. So you can take a screenshots ले लीजिए and please write it. Number 1, concept number 2, write it in the same way. Concept number 2, what are generally accounting standards and principles? I will show you one notebook कि कैसे लिखा गया है स्टूडेंट से. How beautifully she has written all these things. Number 3, accounting standards deals with and benefits of accounting standards. And this is the accounting standard setting process. Okay, so write it properly. After break, we are going to start with next concepts. That is, next concept कौन सी है? Yes, वो break के बाद मैं बताऊंगा. Global accounting standards. Okay, and after break I will show you one notebook of 100 pages. Thank you. अशोक जी ब्रेक ले लीजिए.
Welcome back once again, beta. See how beautifully one of my student has written all these notes in detail. You can check here. Yes. And if you want, at least you will understand. So this is the page number 1. What generally accepted accounting principles. So this is your 100 pages ka book. What are the generally accepted accounting principles? Common set of accepted accounting principles, standards and procedures. You already taken these notes. Accounting standards are written by policy documents, government के साथ. Concept number 3 पे accounting standard deals with recognition, measurement, presentation and disclosures. So by heart करना है, रट्टा मार point है. Recognition means entry, measurement means amount, presentation and disclosure. So RMPD analysis. रेड पेन भी लिखा हुआ है. बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू कैन सी बाय हार्ट करना पड़ेगा. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, requirement for additional disclosures, comparability of financial statements and reduction of the scope. So this is very easy for revising all the concepts. Yes beta. Chalo, welcome back beta. Don't waste your time now. Okay, we have to start this journey as early as possible. Okay. Yes. Chalo, next one. Then beta Rita. Now Rita is saying, sir, please don't trust on all these myths and false statements. Now she is telling beta, one thing I will tell you clearly. You follow only ICAI faculties. Okay. If you want to follow other faculties, you can. But beta, myths are always there. They will give false statement that new course is very tough. Beta, nothing is tough in the new course. Just this new course is introduced to make it, comparable in your competitive market. Okay. So new course is related to, what is going in the real life. Okay. So they removed many topics from the syllabus which are not required. And that's why many faculties, now accounting standards are very boring part to teach. So many faculties, they do not have grip over the accounting standards. Okay. And that's why they make this nuisance ki no, new course is very difficult. New course aisa hai, waisa hai. If you go by my approach, you will never find new course difficult. Ulta मैं बोलूंगा new course is very easy as compared to earlier course. You are very lucky that now you don't have to read EIS essay. Okay. You don't have to read accounting, there are 2 parts, advanced accounting plus accounting. Okay. So your syllabus is now reduced and your articleship will start. Foundation level, no doubt, it will be difficult one. But inter level, according to me, it's not very difficult. So, जो यूट्यूबर्स बनाते ना बेटा, उसके ऊपर मत जाइए. जो संकेत सर बता रहे आपको, कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए. सी दिस स्टूडेंट, हाउ ब्यूटीफुली शी हैज रिटन एवरीथिंग. ओके, शी मेंटेन हर नोटबुक प्रॉपरली डेली बेसिस पे. यस, आई हैव गिवन एडवाइस. Okay, because I am taking some Zoom classes on Pimpri Chinchwad branch also, but it is in Hindi. ये हिंदी में होते हैं. तो सीए इंस्टीट्यूट की ब्रांच है, मैं वहां पे लेक्चर्स लेता हूं. तो वहां पे मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स है जो जुड़े हुए हैं. सो यस, ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि शी हैज प्रॉपरली मेंटेन हर नोटबुक ऑफ 100 पेज. लॉ के बुक्स भी प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, टैक्स भी. एंड दे आर फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. दे नेवर थिंक कि आईसीआई के छोड़ के दूसरा कुछ होता है. सो यू बिलीव ऑन अस, डोंट वरी. इंस्टीट्यूट हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेशंस ऑल्सो. प्रीवियसली वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग फेज. वी आर गिविंग दिस फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो माइट बी रिविजन्स वगैरह के लिए थोड़ा कभी कभी दिक्कत आता है. ओके. So don't worry बेटा. And YouTube पे मत जाइए. This is the simple advice. If you understand my things, संकेत सर जो बताते हैं, if you read study material and you are getting the same point, suppose now if I will show you the study material. Okay. See, this is the first chapter. हाँ. See, study material.
Generally accepted accounting policies, principles. Have I covered this? Yes, sir. You covered this. Okay, recognition, measurement, presentation, disclosure. Yes, sir. Accounting standard benefits बेटा डील्स विथ क्या होता है वो होने के बाद हाँ बेनिफिट स्टैंडर्डाइजेशन हाँ नाउ under that you have to read by your own requirement for additional disclosure. Now at least you know the headings, comparability. So beta, this is very simple for you. Okay, then standard setting process. So we have covered 7 pages in a day here till now. Okay, we are getting 2.5 hours daily. Study 2 subjects regularly. It will be very easy for you. Okay, don't start with 4 sessions, 4 lectures immediately. Okay, step by step approach rakho. Accounts you read it in detail. Now that's why I requested ICAI ki take 4 days in a week account session and only 2 days in a week law session. In the morning you can start with your second group also. So simultaneously you can start with your other subjects. Okay, and that's why, and meanwhile if you have beta no articleship, so definitely you do not have articleship in from 11 to 6 p.m. now, so beta in that period you can read from study material. Okay, make your notes. Handwritten notes are always very important. See ये notes मैंने ही बना के दिए हैं, but she has written it beautifully. Okay, तो आप लोग भी screenshots लीजिए and ये notes लिखिए. After the session it will take 2 hours to write all these things. Daily 2 hours classes, 2 hours study plan. बेटा और क्या चाहिए, एक प्रॉपर स्टडी प्लान कीजिए. मेक यूर सिंपल स्टेप्स टुवर्ड्स यूर सक्सेस. अभी तक आपने कुछ क्लासेस ज्वाइन भी किए होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि विद इन 1 मंथ यू अंडरस्टूड कि नाउ एवरीथिंग बेटा मेसअप हो चुका है. सो वंस अगेन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी. सो उठिए और वापस से पढ़ाई को लग जाइए. 1 महीना आपको जो मिला था आपने उसमें कुछ भी नहीं किया है, तो यू स्टार्ट यूर जर्नी वंस अगेन. डोंट वरी, डोंट सी योर पास्ट. नाउ स्टिल यू हैव 8 months, और अभी नहीं किया तो कब करोगे. सो स्ट्रांगली उठ जाइए. यस, वेकअप कॉल एंड प्लीज डू इट रेगुलरली. ओके, आई विल मोटिवेट यू, डोंट वरी. चलो और कुछ. यस बेटा, यस. यस, थैंक यू बेटा. सुमित्रा, accounting standards are very boring, but still you explain it and make it very interesting. Thank you beta. चलिए. Next one, list of accounting standards we have done beta. So now let's move to next concept. Need. List of accounting standards we have done. 52 seconds. Haji. So now next concept, need for convergence to global standards. Sir, what is the need for conversion to global standards? Yes, चलो वेलकम बैक बेटा, वेलकम बैक, वेलकम बैक. चलो आ जाइए फटाफट. यस, डोंट मिस द सेशन. कोई भी क्लास छोड़ के इधर उधर नहीं जाएगा. एवरीवन विल अटेंड टिल लास्ट मिनट. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. टुडे वी हैव टू कंप्लीट फुल चैप्टर नंबर 1. ओके, सो आई वांट योर कोऑपरेशन फ्रॉम एवरी स्टूडेंट. ओके, चलो. So what is the need for conversion to global standards? Sir, why there is need कि that India they think कि नहीं we should go for global level. Global level पे क्यों जाना है? देखिए, reasons are very simple. क्या हुआ मेरे दोस्त? I don't know what happened. 1 minute. एक मिनट. हाँ, सिर्फ कुछ तो प्रॉब्लम हो गया. यस.
Okay. Okay. Chalo. Yes. Let's start once again. Need for convergence to global standards. Sir, global standards में जाने की क्या जरूरत थी? Let's understand it quickly. Now I will take your queries after 15 to 20 minutes. So now next 20 minutes are very crucial. Don't get disturbed. So need for convergence. First one, each country has its own set of rules. See, every country, for example, US have US GAAP. UK, they have IFRS. Okay. So each country has own set of rules and regulation. It's like your क्या बोल सकते religion. So every religion has its own rules and regulations. बेटा अभी हम लोग जैन धर्म में है तो जैन धर्म बेटा we follow पर्यूषण. ओके. सो मुस्लिम होंगे तो बेटा उनका नमाज होता है. ओके, रोजा रखते हैं. सो एवरी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. So, to raise from the capital from international market. So see, now I'm in India. Okay, I think now assume that Kazakhstan has, lower interest rate as compared to India. Okay, their rate of interest might be lower than our interest rate. And one Kazakhstan, क्या उनके करेंसी को आई एग्जैक्टली डोंट नो, भूल गया मैं, बट 5 रुपीज मीन्स अपना 1 रुपया होता है. देयर 5 रुपीज इज अवर 1 रुपी. ओके, रुपीज नहीं, वट एवर द करेंसी. सो 5 उनके करेंसी इज अवर 1 रुपी करेंसी. सो नाउ therefore, now what happens? Suppose if I think, no, I will raise loan from the Kazakhstan bank. Okay. So now in that case, they will study my financial statements because they are not aware about my financial statement. It might be in Indian rupees. Okay. So here, what is going to happen? Yes. So therefore, now at global level, I want to translate and reinstatement. Reinstatement means what? I will my financial statement, I will convert it at global level standards. Suppose now Kazakhstan is following their rules and my rules are Indian standards. Okay. Now to compare, it is very difficult. So we need one accounting standard where beta, yes, now they are better speaking in Russian language because it's near to Europe and we are speaking in Hindi. So one medium of, language is English. Okay. It might be better very difficult for Indian people. They might speak good English, but better for them, it's very difficult. Okay. Because they never speak in better proper English में. तो इतना याद रखो. तो it is very difficult. But yes, whatever the English they are getting, so our statement must be comparable with their statements. Okay. They must understand our language. So English is a language. Similarly, we are having global standards. So global standards means what? It is English language in simple way. Now you can correlate. So their set of rules are different. Our set of rules are different. But to make it comparative, we will have one set of account and that is called as IFRS. Okay. That is called as International Financial Reporting Standards. Okay. Very simple. And therefore, investors also. Now investors, suppose for example, if US investor is there, they want to invest in Indian company, they have option to invest in the Kazakhstan. So beta, so our financial statement must be comparable and therefore we need to accept. So if I want finance from the US company instead of Kazakhstan investment, I want finance. In that case, beta, I will ask that investor and he will ask for my financial statement and this financial statement must be understandable by him and therefore we need global standards. Okay. So investor also needs global standards. Next one is multiplicity of accounting standards. They create confusions. They
create confusion. So multiplicity, Indian standards are different, श्रीलंकन standards are different, नेपाल वाले तो अपने को फॉलो कर रहे हैं. So बेटा yes, so और बाकी जो आजू बाजू के कंट्रीज है एक दो, उनको तो हम लोग गिनते ही नहीं है. Okay, so multiplicity of accounting standards create confusion and encourage errors और may फैसिलिटेट फ्रॉड्स. मैं कौन से बारे में बात कर रहा हूं समझ लो, 12 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को आएगा समझ में. ओके, सो हियर multiplicity of accounting standards create confusion and encourage errors and may facilitate frauds. Okay, so we need a single set of global standards. We need a single set of only one set, so all over world you can read it. Okay, and therefore we need global basis based standards to improve the ability of investor to compare the investment in global basis. And for companies with joint listing, for example Indian company which maybe is listed on the New York Stock Exchange, so beta for that listing purpose we need one set of standards, and therefore global standards are required. So Indian standards are not sufficient, so our standard must match with international level. Now you got the concept why there is a need of global standard once in Hindi. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. ओके, हिंदी में पूरा समझ लीजिए कि भाई ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब क्या. तो आप जो है आपकी दुनिया में तब बढ़ती जा रही है, सिर्फ इन्वेस्टर इंडिया तक सीमित नहीं है. आज इन्वेस्टर जो है वो मुझे लोन चाहिए होगा फॉरेन से, भाई मुझे फॉरेन में सस्ता लोन मिल रहा है तो काहे को मैं इधर 8-9% से इंटरेस्ट रेट भरूं, मैं 4% से जाऊंगा. हाँ बेटा, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क ऑलवेज इज देयर, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैंने हेजिंग करके, हेजिंग क्या होता है आपको मैं इस 11 में पढ़ाऊंगा. सो मैंने कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके बाहर से लोन लिया 4-5% पे. ओके, सो वो जो लोन है बेटा, मुझे बाहर का लोन सस्ता है, तो वो लोग मुझे लोन कब देंगे, जब वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करेंगे. अभी वो तो इंडियन स्टैंडर्ड में रहेंगे, आपकी लैंग्वेज में रहेंगे बेटा, तो उनको आपके P&L के जैसा उनका भी P&L होगा, पर उनको आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए. तो हमारे रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स भले इंग्लिश में रहेंगे, पर उनके और अपने रिपोर्ट्स का एक जो प्रेजेंटेशन है, उनका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन और अपने बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, मतलब क्या सर, हमारी बैलेंस शीट लायबिलिटी से स्टार्ट होती है पर इंड एस एसेट्स से स्टार्ट होते हैं. इंड एस में जब फाइनल में पढ़ाऊंगा तो एसेट्स से शुरुआत होती है, और अभी की हमारी जो एस की बैलेंस शीट है ना, वो लायबिलिटी से शुरुआत होती है. तो ये दोनों मैच तो होने चाहिए, और ये मैच करने के लिए हमने क्या किया, ग्लोबल लेवल पे हमारे स्टैंडर्ड्स को हम लोग लेके आए. और हमारे स्टैंडर्ड्स को लेके आने का यही फायदा है कि बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं होगा, कि उनको भी इजीली अपने स्टैंडर्ड समझ में आएंगे. वो क्यों अपने स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे बाद में वापस से, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही लैंग्वेज, वो क्यों हिंदी सीखेंगे, वो उनकी रशियन लैंग्वेज चल रही है या उनकी जो भी लैंग्वेज चल रही है वहां की, वो क्यों अपनी लैंग्वेज सीखेंगे, हिंदी नहीं सीखेंगे. तो हमने कंपेरेबल करने के लिए क्या किया, ग्लोबल लेवल पे एक ही लैंग्वेज रखी, इंग्लिश, जो दोनों को भी समझ में आए. आया समझ में? इट्स वेरी सिंपल. सो यहां पे हमें यह ध्यान में रखना है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हमें जाना है. और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे हमें क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन्वेस्टर कहां का भी हो सकता है. इन्वेस्टर यूएस का हो सकता है, उसको इंडिया में भी अट्रैक्शन है और कजाकिस्तान में भी है, तो वो कहां पे इन्वेस्ट करेगा ये डिपेंड करता है. ओके, चलिए, सो नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट. यस सर, वी गॉट द कॉन्सेप्ट. चलो, तो इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट बाद में ले लेंगे. हाँ जी, तो मेरे स्टूडेंट ने ये लिखा हुआ है क्या, एक बार चेक कर लो उसने कैसे लिखा हुआ है. यस, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. हाँ जी, need for conversion of global standards. So you can see here already she has written all these things better in detail. तो आप लोग भी इसी तरीके से लिख सकते हो. yes, so screenshots बाद में लेना. yes, I will give you time to take screenshots but not now. चलो next one I will show you. okay, why US is not following IFRS बेटा, they are thinking they are superior. Okay, कि we are superior than IFRS, so they are not following. And it's not compulsion ना, कि it is not compulsion that you should know the English language. If you know English language is okay, it doesn't mean that everyone should speak it in English only. No,
Okay, so similarly, everyone, we can't force every country to adopt IFRS or Ind AS. Okay, so we are also not following IFRS as it is. That you will understand now. That you will understand. Don't worry. So now you will understand what is exactly IFRS. Okay, and what is the difference between IFRS and our standards. Chalo. So international financial reporting standard. Now you understood what is global standards. Now let's understand international financial reporting standards. Okay. IFRS, it means not only standards, it is interpretation also. Interpretation, some terms are very difficult to define. So we have interpretations in it, which is issued by IFRS. किसने issue किया है? IFRS ने issue किया. Okay. So we have IFRS. We have a separate committee for that. Second one, क्या दिक्कत हो रही है सर? नया लैपटॉप लेना पड़ेगा लग रहा है. ओके, यस बेटा, ऑल सब्जेक्ट्स का पोर्शन आराम से इंस्टीट्यूट के साथ कंप्लीट होगा. डोंट वरी. एक ही मिनट बेटा. ठीक है, जब तक सेट नहीं होता आई विल शो यू हम नोटबुक. चल बाकी का क्लोज कर देता हूं मैं. ओके, so IFRS are international accounting standards which are issued by IASC. ओके, अभी ये जो है ना IFRS का, मुझे पता नहीं है क्यों तकलीफ. Okay, yes, some technical problems. Okay, चलो. See बेटा, IFRS are issued by ISP. अभी ये थोड़ा सा चार्ट गलत हो गया है. IFRS are issued by IASP. So ये सबसे पहले आना चाहिए था. So this is International Accounting Standard Board. Okay. Now ये 1, 2, 3, 4 आना चाहिए था. Okay. Now International Accounting Standard are issued by IASC. ये कौन इशू करता है? तो IASC इशू करता है. सो सी देयर आर टू accounting standards. See, this is very interesting. How IFRS का journey started. See, previously, before IFRS, there were international accounting standards. And in 2001, they introduced out to 1, 2, I think. Okay, so before 2001, 2, there are international accounting standards. And then they introduce IFRS. So whatever in there in IS, they slightly made some changes, okay, according to global standards, but they followed the same IAS.
and whatever new accounting standard they introduced is called as IFRS. I will show you. उनके numbers में बताता हूं. Yes, आपको easily समझ में आ जाएगा. Yes, हम लोग नंबर देखेंगे ना. हाँ जी, तो हम लोग जहाँ गूगल करते हैं लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स IFRS, सो यू विल अंडरस्टैंड इट. क्या मुझे बोलना है? ओके, चलो गूगल पे आ जाओ. गूगल किधर है भाई? चलो मैं इधर एक काम करता हूं. बिंग कोई पूछ लेता हूं, गूगल को नहीं पूछता हूं. IFRS list. Yes, IFRS list. I will show you IFRS का list. Okay. So you can see here, there are two numbers. You can check. International Accounting Standard. See, 1975. So first standard they introduced in 1975, and then presentation they introduced in 1997. Okay. And now after all these accounting standards, now these some accounting standards, beta, they removed it. Why they removed it? Because they introduced IFRS. And IFRS they started in 2003. 2002 बोला था. हाँ, journey they started in 2002 and then first time adoption. So see the list. So IAS up to 2000 they have IAS, International Accounting Standards. Okay, so ये मैं आपको बताना चाहता था. And then they extended. क्या extend किया उन्होंने बेटा? Then they extended it to IFRS. तो देखिए, पहले क्या था बेटा? पहले IAS था. स्टार्टिंग में दे स्टार्टेड विथ IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड देन दे इंट्रोड्यूस्ड IFRS. फ्रॉम yes, when they started their journey बेटा, you can check it on Wikipedia बेटा, आपको मिल जाएगा Wikipedia पे. Yes, they started their journey from 1975. So first standard when they introduced in the global level पे 1975, and IFRS they introduced in 2003. First IFRS, and the combined list we will call it as IFRS. It's not only IFRS. Now we called it as IFRS, but previously they have list of IAS also, and in that list they started, yes, they introduced new accounting standard which is called as IFRS, but they don't change. They didn't change the name of their original standards. They kept up to 2000 the same number and with the same concept, that is International Accounting Standard. And after 2000, whatever they have introduced, it is called as IFRS. Now what India has done? India ने क्या किया? Both of them. In India, they termed it as Ind AS. Now Ind AS जो is similar to IAS number. But Ind AS, when Ind AS 1 is there, it is IAS 1. It is equivalent to IAS 1. The name is same. But IFRS ka number 1 in India, we have 101. We have 101. So Ind AS, we are not giving two different names, IAS and IFRS. No, in India, we have only one set, which is comparable with global standards. If you don't want to compare our standards with global one, we have two sets. We have only accounting standards. So lot of confusion. Wait. Our original standards are accounting standards.
And to make it comparable over the world, we introduced Ind AS. So previously, all companies, they were following AS. But after 2016, we have new rules. And we started with Ind AS. There is no connection between them. AS list is different. Ind AS list is different. Okay. AS still we are following for some companies. For non-corporate entities, we are following accounting standards. But at international level, our listed companies, they are following Ind AS. Okay. So in simple language, small companies, very small companies, they are following AS to make it very easy level. And big companies, they are following Ind AS. I will tell you roadmap. Roadmap means how we started Ind AS. Wait, today we are going to learn that. So what is the new thing that I want to express? Yes, I will teach in Hindi also. Don't worry. So see, international level and at India level. Okay. International level, they started their journey with international accounting standards. And they introduced IFRS. And both of them, when the combined set, they called it as IFRS. We do not have two separate sets, IS and IFRS, because we have only one set to make it comparable, that is Ind AS. They are similar. Their IS, our number 1. And their IFRS 1 is our 101. To make it comparable. You got the concept? So unka IAS, our Ind AS 11. Unka IFRS, their IFRS, our 101. So you have to understand this thing. So now we have only single set of rules. Ind AS. Yes, clear है अभी picture? Yes, clear है क्या picture बेटा? जल्दी बोलो. Yes. No. Ind AS we have to learn in intermediate, nahi, final level. This syllabus is at final level. But you must know what India is following. Okay. You must know what India is following. India is following Ind AS. We are not following IFRS. We are not following. Our name is different. Our name is not IAS. Our name is Ind AS. Okay. हमारा नाम IAS नहीं है. हम लोग IFRS वाले भी नहीं है. हमारी खुद की पहचान है और वो है Ind AS. Our own identity is Ind AS. I will show you the numbers of Ind AS, so it will make you clear. Okay, it will make you very clear. अपना Ind AS का नाम, yes, आपके स्टडी मैट में ही है. आप लोग चेक कर सकते हो. स्टडी मैट में you will get the names. Yes, you can check here. Ind AS की एक लिस्ट दी है इंस्टीट्यूट ने, हमारे प्यारी इंस्टीट्यूट ने Ind AS चे नेम दिए हैं. You can check here. किधर गई रे लिस्ट? हाँ, see. Now this is IFRS 1, which is compared with 101. 101 means IFRS की लिस्ट है. And only one is IAS 1. Only 2 is IAS 2. And when it is 101, so beta it is IFRS 1. Okay. So they have IAS plus IFRS. And we have only Ind AS. Ind AS 1, IAS 2. Ind AS 2, IAS 2. Ind AS 101, IFRS 1. Sir, no need to learn this list. It will be very confusing. You read only simple list of accounting standards. You go with simple list of accounting standards. आपको सिर्फ सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट याद करनी है. यू गॉट द कॉन्सेप्ट. वेरी डिफिकल्ट बट नाउ इट्स सिंपल. एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं. यस, हिंदी वाले एक बार ध्यान दीजिए पूरा. यस, अभी एक बार हिंदी में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बेटा. डोंट वरी,
South Indian students, now please you type it in the comment section, whatever you understood. Okay. If I think you are doing mistakes, तो मैं आपको, yes, I will rectify you. But now, other students, बेटा, those who are very comfortable in हिंदी, आप लोग हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए. देखो बेटा, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं, ये जो बाहर के लोगों की दुनिया है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आईएफआरएस की जर्नी बनाई. तो वो उन्होंने क्या बोला कि आईएफआरएस जो है वो हमें करना क्या है, आईएफआरएस के साथ साथ हम लोगों को बोला गया आप भी आईएफआरएस फॉलो करो. पर इंडिया की खुद की पहचान है. यस, हम बोलेंगे नहीं, वी विल नॉट फॉलो यू. हम आपको क्यों फॉलो करें? हमारा कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है. आप कैसे भी रहोगे, हम लोगों का कल्चर जो है वो ये नहीं मान्यता देगा. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे कल्चर के हिसाब से हम लोग आने की कोशिश करेंगे ना. हम ये नहीं बोल रहे कि हम हमेशा हमारा पहराव आपके जैसा होगा. जैसे महाराष्ट्र का पहला पहराव था धोती, आज भी हम लोग लुंगी पहनते हैं साउथ इंडियन लोग. पर बेटा हमने क्या किया, ऐसा नहीं है कि हर साउथ इंडियन होगा या ये होगा कि हमारे पहराव से जा रहे, हम लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, नो प्रॉब्लम. पर हमारी पहचान हमारे हिसाब से होगी. आप लोग नहीं बताओगे कि हमें डिक्टेट नहीं करोगे कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए. तो हमने क्या किया, हमने हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए. हमने उनके स्टैंडर्ड्स को एज इट इज फॉलो नहीं किया, हमने हमारी पहचान बनाई. हमने बोला देखो आपका नंबर हमारा नंबर सेम रहेगा, आपका रीडर मेरे पास आया तो उसको समझ में आएगा, हमारी भाषा समझ में आएगी, पर वो स्टैंडर्ड्स हमारे हिसाब से होंगे. हमारी इंड एस की भाषा होगी, आपकी भाषा थोड़ी सी अलग रहेगी, थोड़ा सा कल्चर अलग होगा, पर हमारी खुद की भाषा होगी. वो बोले ठीक है, आपको फॉलो तो करना है ना. इंडिया में मतलब हमारे ऊपर है ना, हमें फॉलो करना है कि नहीं फॉलो करना है. हम लोगों ने तो यस बता दिया कि हम लोग फॉलो करेंगे. उनको बताया आपका नाम क्या है, उन्होंने बताया हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. क्या किया, आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1975 में आए थे, फिर वहां पे हमने 2000 तक उनको फॉलो किया. ये वो लोग बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं. फिर उन्होंने क्या बोला, 1975 टू 2000 उन्होंने आईएएस फॉलो किया. फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उनको एक रात में ये हो गया कि नहीं भाई हमारे आईएएस नहीं, हमने और कुछ बदलाव लाना चाहिए. तो उन्होंने नया बदलाव लाया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोल के उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग वर्ड निकाल दिया और उसके बदले में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ड लाया. उनको अकाउंटिंग बोला तो लेमैन डर जाता है, अकाउंटिंग अपना फील्ड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने वर्ड को चेंज किया लेमैन के लैंग्वेज में. ठीक है, चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है. हमने हमारा इंडेस ही नाम रखा, तो उन्होंने इंडेस लाए 2002 से. बीच में क्या हुआ, बीच में वो स्टैंडर्ड आए नहीं कुछ भी. तो 2002 में उन्होंने शुरू किया और पहला स्टैंडर्ड 3 में डाल दिया. 3 में डाल के आज भी वो आईएफआरएस के नंबर से बढ़ते जा रहे हैं. अभी आगे आगे जो भी नंबर्स आएंगे वो आईएफआरएस. अभी हम लोगों ने क्या बोला, भाई तेरा आईएस का नंबर हमारा भी 1 नंबर होगा. फिर वो बोले हमारे आईएफआरएस का नंबर, हम बोले ये रुको 1 नहीं देंगे, हम लोग उसको 101 देंगे. कितना दिमाग लगाया हमने. अभी उनका 1 नंबर मतलब हमारा आईएस का 1 नंबर, आईएस 1 मतलब इंड एस 1, फिर उनका आईएफआरएस 1 मतलब हमारा 101. ये सिंपल जर्नी हमने किया और ये इंडेस हमें शुरुआत की. पर हम लोग बेटा हमेशा बोलते कि फॉरेन से 10 साल हम लोग पीछे है, और पीछे क्योंकि हमारी डेवलपमेंट स्लो है, पर हम लोग परमानेंट है. ओके, ऐसा नहीं होगा नहीं तो कनाडा जैसे कांड हो जाएगा, तो वो नहीं करना है. हम लोग बेटा स्लोली स्लोली जाएंगे. सो 2016 में हमने पहला इंडेस लाया, हमने जर्नी स्टार्ट की 2016 से, और पहला इंडेस का बैलेंस शीट 2017 में शुरू हुआ. वो हम लोग बाद में देखेंगे. बट नाउ यू अंडरस्टूड की स्टोरी क्या थी. आपको आईएएस मतलब किसी ने भी पूछा कि सर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और आपका स्टैंडर्ड क्या होता है, तो आपको बताने आना चाहिए कि उनका 1 आईएएस 1 हमारा इंडेस 1 है, पर उनका आईएफआरएस 1 ये हमारा 101 है. ये होता है इंडेस. हमने पूरा नहीं फॉलो किया, हमने उनके एज इट इज फॉलो नहीं किए. अब एज इट इज को क्या बोलते हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे. सो दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल जर्नी इज. सो एट इंटरनेशनल लेवल इट इज आईएस प्लस आईएफआरएस, एंड इंडियन लेवल वी हैव ओनली इंडेस. यस, अंडरस्टूड दिस स्टोरी. यस, परफेक्ट. Guidance note. GN means guidance note. Yes, story understood क्या बेटा. बेटा बिल्कुल भी स्टोरी को छोड़ना नहीं है. Yes, so new concepts, many new things today you are going to learn in these standards. Okay बेटा, so many new things. हाँ, now we are not adopting Ind AS. Ind AS nahi. We are not adopting IFRS. We are converting them as per our need. Okay. So there are 2 types of IFRS. One, the country who is adopting as it is.
This is called as adoption process, means pure IFRS, no change. No change as per your country. You are following IFRS as it is. You do not have separate set, but we are not in the adoption process. We are in the convergence process. Now, what is convergence? We are making changes in IFRS and we are not following them as it is. So we are in the convergence stage. We are not adopting. We are not adopting. Those who are adopting countries is they are purely. So if they are saying okay, we have adopted IFRS, then they have used IFRS as it is. And if you are using the word we converge IFRS, means we have made changes in IFRS. हमने IFRS में change लाया. Okay? Okay बेटा? Yes. Easy है? हाँ जी. Very good. Kartika ji has written, India has had AS, but to make it comparable with the global standard, they called it as Ind AS. Small companies still follow AS. And similarly, international level, we have IFRS and IAS, equivalent to 1 and 101 with Ind AS. At first, IASC developed IAS after 2001 and ISB was formed with 75 countries. Now, beta, she has given extra knowledge. Kartika ji, very good. Very good. Now I'm going to tell you that things. Yes. And adoption means purely and convergence means partially. Very beautifully written by Kartika ji. Yes, beta. Very beautifully. Yes. Many South Indian students. Now we got the logic behind it. Very good, beta. Very good. Yes. I want every one of you. Please note down these changes, beta. थोड़ा सा time बचा है. And you understood it very well. I don't want to force you कि मैं extra पढ़ाऊं, but I want everyone must know the journey of Ind AS and AS. Everyone. आज आपको रात को सोने के पहले, before sleep, everyone must know what is the difference between IS, IFRS, Ind AS and AS. Kartika ji, superb. Explained it in very well way. Okay. Chaliye. And when we change, we have some deviations. And deviations are called as carve-ins and carve-outs. What is the name? Carve-ins. Carve-ins means not whatever deviation you have made. See, some deviations. For example, they are using the word financial position statement. We are using the word balance sheet. They are using the word comprehensive income statement. We are using the word P&L. So this is the deviation. So words are different. Their words, their terminologies are different from Indian terminologies. So terminology का जो difference है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं carve-ins and carve-outs. ठीक है. Okay? चलिए. Very good. Very good. Yes. So benefits of conversion. What is the benefit? Yes. We will take this screenshot afterwards. Becoming the IFRS adopted nahi. Compliant. We are in the convergence stage. We are not following as it is. We are not following as it is. We have some changes in words also and in concepts also. Cross-border flow of money. Now it's possible. It's possible. Okay. You can exchange your flow of money. Global listing in different stock markets. So if you are following Ind AS or IFRS, now global listing is possible because our balance sheet is similar to their balance sheet presentation. Comparability of financial statement. It is possible. And enhanced accountability. So enhanced accountability means your responsibility is increased, okay, and greater transparency. See, IFRS has given you extra
disclosures. Okay. And transparency is more. So we are shifted from accounting standards to Ind AS. Okay. We also shifted ना बेटा हमने भी change लाया है हमने. Okay. So new codes, old codes to new codes. It's a shifting. Similarly, we previously accounting standards and now Ind AS. So we shifted from accounting standards to Ind AS. So this is the journey. This is the benefit of accounting standard. Yes, sir. Now we got the concept. What is IFRS? We are not following IFRS as it is. We have converged them. हमने उनको वैसे के वैसे फॉलो नहीं किया. हमने उसको बदलाव लाया. Okay. Yes. Okay. चलो. Yes, beta. I will explain carve outs. Don't worry. अब वापस देखिए विशाल पांडे जी सेशन को. आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा. अभी मेरे पेशेंस खत्म हो गए क्योंकि मैं सेम चीज आपको वापस नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि आपने वापस लिखा कि सर मैं आईएएस आईएफआरएस और इंड एस में कंफ्यूज हूं. बेटा कुछ कंफ्यूजन नहीं है. पहले वो लोग फॉलो करते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फिर उन्होंने नया सेट लाया जिसको उन्होंने नाम दिया आईएफआरएस. फिर हम लोगों को बोला कि आप लोग भी ऐसा फॉलो करो. हम लोग बोले अपने अच्छे से हमारा हम लोग फॉलो करेंगे. तो हमने उनको बोला कि भाई तुम्हारे जो नंबर से वो नंबर से हम लोग फॉलो करेंगे. पर उनका क्या हुआ? उनका आईएएस 1 था तो हमने इंड एस 1 लाया. उनका आईएफआरएस 1 था तो उसके बदले में 101 लाया. बहुत सिंपल है. हमने उनको ये नहीं बोला कि आप जो बोलोगे वैसा ही हम लोग रहेंगे. हमारी कंट्री है, हमारे हिसाब से चलेगा. ओके. उसको बोलने का इंड एस एकदम लॉजिकल है. ठीक है. यस. अभी मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूं रे. सर वेट ना बेटा, वेट. मिस्टर भरत जी प्लीज वेट सम टाइम. Wait for some time. I am going to explain you roadmap. Don't worry. Roadmap you will tell me it in the next session. अभी ये possible नहीं है कि today I will cover both remaining part. So we will cover it on Wednesday. So I will give you some homework. Okay. And in next session, yes, I will explain you remaining part. Convergence. Now convergence is convergent to IFRS, not adoption. Yes, sir. You already taught us. Applicability of IFRS in India considers legal and other conditions prevailing in India. So there are some deviations. So India का culture अलग है. So deviation होगा. You can't force us to wear only, foreign Western dress. Yes, we have sari, we have Punjabi dress. So we will wear that. Okay. तो हमारी ये होगी. यस, महाराष्ट्र में हमारी पैठनी होगी. गुजरात में गए तो और कौन सा टाइप का साड़ी मुझे पता नहीं. पर यस, तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एज इट इज फॉलो नहीं करेंगे. देयर माइट बी अ डेविएशन. सो सिमिलरली इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग आईएफआरएस इफ रिक्वायर्ड. ओके. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो इंडिया का है, इन कंसल्टेशन विद एमसीए. But obvious, we always take MCA consultation. We derive 2 sets. One is Ind AS, which is applicable for big companies. Okay. Abhi, which companies? Wait for some time. There is turnover criteria. And second one is AS. Accounting standards for small company. You can call it as small company. Okay. Other than big companies. So this is how we have to understand this. Yes. Convergence. So we are not following as it is. So we have 2 set of books. One is Ind AS and one is AS. Okay. So till now everything is clear. ISB, अभी ये इनका एक बोर्ड है, with the objective of setting global standards. Now it's their board. Our board is accounting standard board. Pramod Jain sir. Okay. So with the objective of setting global standards. So in IFRS they have international accounting standard board. Similarly, जैसे इंडिया में ASB है तो IFRS का ISB है, international accounting standard board. But before 2002, their board is not there. There is a committee. There was a committee. And now they have board. They switch into board with the help of 75 countries. So 75 countries ने क्या किया? They adopted IFRS. Adopted नहीं, some converge भी होंगे. And ISC restructured into ISB. थोड़ा सा history है. It is only history. Now no one is going to ask you कि what is exactly board and committee. So when they started their journey of international accounting standards, when they started their journey 1975. So first accounting standard they introduced in 1975.
ओके सो देखो मेट्रो का जब आपके सिटी में मेट्रो आती है तो एक साल में नहीं आती मेट्रो, इट टेक्स 2 to 3 years। जैसे अभी पूना में मेट्रो अब भी आया, वी स्टार्टेड, मेट्रो अब भी आया। कोलकाता में कब आया था बेटा? 83-85 में मेट्रो आ गया था, फर्स्ट कोलकाता मेट्रो सिटी थी। सो सिमिलरली पुणे में थोड़ा कम लेट आया, अभी 2021-22 में शुरू हुआ, प्रोजेक्ट 20 में शुरू हुआ, और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 2022 में पहली ट्रेन आई। तो दैट वाज द डिफरेंस। Similarly, when we started our journey, international accounting standard, they started their journey in 1973, and for that they formed one group, and that group is called as IASC, International Accounting Standard Committee. So previously it was committee. See the beautiful journey, huh? आज हम लोग जर्नी सीख रहे हैं, how accounting standard introduced. It's not one day process, it's we are running it from 1973। इंडिया में तो और लेट आया, 10 साल आगे पकड़ लो, our first standard। okay, so they introduced committee introduced in IAS, and IAS they formed a group of ISC, they formed this countries accounting bodies, every country, yes, they introduce this accounting standard, they ask other countries to adopt this, and then इंडिया को ये आईसीआई ने भी फॉलो किया, बट वी फॉलोड आवर वे, एस लाया था हमने, एस लाया था तब, और 2016 में हमने इंड एस लाया, एंड दे स्ट्रक्चर गेट चेंज। सो कमिटी से दे फॉर्म्ड इनटू बोर्ड, पहले कमिटी था देन बोर्ड दे स्टार्टेड। ओके सो 2000 में बोर्ड आया, एंड ये बोर्ड की जर्नी 31 March 2001, इट इज कॉल्ड एज आईएससी up to 2001। So I told you, and after 2001 they called it as board। जो कमिटी ने लाया that is IAS, and board ने लाया that is IFRS। So committee introduced IAS and board introduced IFRS, and we have board, we have only board, and we introduced Ind AS, but when? In 2016। that is a roadmap. That roadmap we are going to see it in the next lecture, but this is how this international standard board is formed। okay, so international standard board is not immediately formed in 2001, before 2001 they have committee, and they started with IAS and board started with IFRS। understood the journey? Say yes or no, beta journey is very beautiful, huh? Always। okay, say fraud is not going to restrict, more transparency is there, your accounting set increased। okay, I will show you now, I will show you, don't worry। okay, Ind AS का जर्नी बेटा, you will read Ind AS journey। okay, so Ind AS journey I will explain you in the next session, but before that you must finish your homework। what I am expecting from you, you go through your study material perfectly, then you will read। yes, एक बार मैं हिंदी में पूरा जर्नी बता देता हूं बेटा, एक बार yes रिवीजन आई विल टेक इट इन हिंदी, दैट आईएफआरएस का जर्नी। देखो बेटा, हमने हमारा इंडिया का मैंने बता दिया, इंड एस का सेट है। अभी आईएफआरएस का कैसे हुआ ये भी ध्यान में रखो कि आईएफआरएस जो आए थे, आईएफआरएस के पहले आईएएस थे, ये तो आपको समझ में आया। अभी आईएएस जिन्होंने बनाए वो एक कमिटी वाले लोग थे, तो वो लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी फॉर्म की थी, पर उनको लगा कि भाई कमिटी के ज्यादा बोर्ड इज इंपॉर्टेंट। कमिटी क्या होती है? अपने अपनों में बनती है, और बोर्ड जो होता है ना वो बड़े लेवल पे बनता है, बोर्ड का एक अपना अस्तित्व होता है। सो कमिटी उन्होंने डिसॉल्व किया, कमिटी को उन्होंने बोल दिया नहीं अभी हम लोग बोर्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, और ये बोर्ड वालों ने बोला कि हम लोगों ने आईएफआरएस लाया। बोर्ड वाले क्या बोल गए? हम लोग आईएफआरएस लाया। समझा जर्नी? 1973 ये पहला कमिटी फॉर्म हुआ था, वहां से 2001 तक वो कमिटी चली। 2001 के बाद बोर्ड स्थापन हुआ, और बोर्ड के स्थापना के बाद उन्होंने आईएफआरएस लाए और कमिटी ने आईएएस लाए थे, और हमने ये दोनों को फॉलो नहीं किया। हम लोगों की जर्नी इंड एस की जर्नी है, जो आप लोग पढ़ के मुझे बताओगे नेक्स्ट सेशन में कि इंड एस की जर्नी कैसी है। टिल हियर आई डोंट थिंक कि आपको मैंने बोर होने दिया। वी हैव कंप्लीटेड almost carve outs, carvings beta I will tell you it in the next session। yes definitely I will tell you it in the next session। I hope आपको मजा आया बेटा। आज हम लोगों ने कितने पेजेस कवर किए, what are carve outs and carvings, आपको खुद से पढ़ना है थोड़ा। so you have to finish today
till convergence to, yes, Ind AS ka journey, you are going to tell me it in the next session. Don't, this roadmap is important. Try to read this journey, beta. And in next session, beta, I will finish this topic and we'll start with the chapter number 2. What are my expectations? हाँ जी, take screenshots, beta. Screenshots ले लीजिए. So मैंने कहां तक कवर किया था? यहां तक. तो यहां से स्क्रीनशॉट्स लीजिए. Today you finish this screenshots, beta. Write it in your 100 pages book. It will take 40 to 50 minutes. Then read your study material. बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो बेटा. न्यू जर्नी है, संकेत सर के साथ है, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो आप लोग. यस, टेक अ स्क्रीनशॉट्स. IFRS का जर्नी. यस, IFRS का यहां से शुरुआत करना. IFRS इशूड बाय ISB, देन इंटरप्रिटेशन, देन 3 और ये 4. हाँ, so ये 1 2 3 4. Don't draw the diagram, you can write one by one. और IS issued by ISC and adopted by ISB. सॉरी, इधर से सॉरी मेरी गलती हुई. ये है 1 2 3 4. SIC मतलब स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी. Interpretations are issued by SIC. SIC मतलब Standards Interpretation Committee. So Interpretation Committee is different. Okay, so ये बताना रहेगा. So Interpretation Committee, yes, I left this part. So committee is different for interpretations. Interpretation means if any word is not understandable, that word or more clarification required for that word, then beta committee gives that interpretation. Separate committee. हाँ, so these are principle based standards. Principle based standards. So accounting standards are not rule based. IFRS are principle based. So you can write over here, not rule based. Principle based. Rules nahi, dictate nahi. Principles and rules are different. That story I will tell you it in the next session. And become IFRS compliant. Okay. And what are the benefits? You can take a screenshot of these two. Benefits of converged standards with IFRS. Cross-border flow of money. Benefits also. You can take a screenshot. Yes. And India ka conversion. Yes. Take a screenshot of this. Convergence process. You can take a screenshot of convergence. You can write over this. Okay. So this is the next concept, and concept 6 is with the objective of setting standards. ये आपको लिखना है. Yes, you have to write it in 100 pages book today itself, and Ind AS we'll see it in the next session. So Ind AS हम लोग next session में देखेंगे. I will show you the notebook of my student also, one of my student. So she has written it very beautifully. International Financial Reporting Standards, International Financial Global Standards, IFRS compliant, and benefits of converge with AS and IFRS. So you can see only 4 pages. Only 4 pages. Concept number 9 tak. Yes. और ISB यहाँ तक का जर्नी उसने लिखा है 5 pages. So you have to finish only 5 pages writing, and study material ke we have covered almost 20 pages. So this is how we have to write our answers. I will give you notes directly. See beta, it's very easy for me to give notes also, but I want every one of you, please write it in your 100 pages book. Writing will develop your skill. Okay. You read your study material now thoroughly. Each and every point, you will find it very simple. If you have any doubt in your study material, you can ask me in the next session. I will be very happy if you read it from your study material. So I will feel like, yes, I'm a great mentor if you are able to read the study material and you can interpret the study material. And if you are creating interest in study material, so I am a good teacher. Otherwise, I am not a good teacher. I hope
यू विल शेयर दिस सेशन टू एवरी फ्रेंड. आप लोगों के साथ आज बहुत मजा आया. जो अटेंडेंस आज फर्स्ट डे पे है, आज ऑलमोस्ट देर आर 300 प्लस स्टूडेंट्स दे आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब, 400 प्लस एंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स ऑन अवर app. तो आज का सेशन almost watched by 1500 plus students and many students are there. Those who are not attending this, but tell your friends to share this session. Please share this session to your friends also and make this session very interesting. और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. ओके, चलो हम लोग आगे जाएंगे. Yes, please your comments and like button is very important. Comments तो हम लोग नहीं दे पाएंगे YouTube पे. Here you can give me comments and yes, I will read your comments. Thank you so much. और please, please, please लेक्चर मिस मत करिए. डोंट मिस अ सिंगल सेशन. थैंक यू. गुड नाइट. टेक केयर. और बिफोर बेटा स्लीप, प्लीज रीड ऑल दिस पॉइंट्स एंड कंप्लीट योर 100 पेजेस का बुक. कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. गुड नाइट. यस, यस, ओवर.